I'm going for a butterfly cut. Bouncy blowout. Mhm. Okay. I found out about you guys through Instagram. Yeah, the ambience was really nice. I like the way you guys dress. You guys dress really nice. And the way you guys style, I was like in love with everything. So I was like, okay. Great. Okay, so tell me, length is quite long. શું પ્લાન છે I તમારો? don't want to cut down on length that much કેમ કે Okay. મારે જલ્દી ગ્રો નથી કરતા Okay. તો જેટલા ડેમેજ થાય થિંક એટલે તમે 2-3 ઇંચ 4 ઇંચ જે તમને ઠીક લાગે ડેમેજ છે એટલા ઓકે રાઈટ અને બાકી મને જોઈએ છે એટલું કે મેં સ્ટાઇલ કરવા માટે પોની સિવાય બીજું કંઈ અત્યારે નથી કરી શકતી કારણ કે એકદમ ફ્લેટ લુક આવે છે રાઈટ તો એ થોડો પ્રમાણે વોલ્યુમ તમે- આવી જાય એવી રીતે આપણે હા, કરીએ બરાબર સો exactly. લેન્થ થોડું આપણે bouncy આટલી હોય. શોર્ટ કરીશું Okay. ધીસ ઇઝ ધ લેન્થ રાઈટ એન્ડ રેસ્ટ એવરીથિંગ જે બી આપણે કરીશું એ અંદર ફેસ ફ્રેમિંગથી લઈને બધું કરીશું રાઈટ બટ સી આ લેન્થ પાર્ટ છે જે કટ થશે આપણો આટલો રાઈટ બાકી અહીંયાથી કટ થશે આપણા ફ્રન્ટથી ઓકે Okay. બટ ઓવરઓલ શું થશે કે એ ફેસ ફ્રેમિંગ થશે રાઈટ જેનાથી વોલ્યુમ આવશે વધારે મુવમેન્ટ દેખાશે ખુલ્લા બી પ્રોબ્લેમ નથી રાખવું પણ ઓવરઓલ લેન્થ જે એ તો હા last છે, એ બસ તમને મેં એનાથી કીધી એટલી જ રહેશે બાકી આટલી જ રહેશે બરાબર છે પરફેક્ટ છે તને રેડી ફોર ધ ટ્રાન્સફોર્મેશન યસ ઓકે સો ફાઇનલી તમારો બર્થડે મેકઓવર હિયર ઇઝ યોર ફાઇનલ લુક પરફેક્ટ 100% સેટિસ્ફાઈડ છું ગ્રેટ Welcome to Hairpod Wow. Thank you. कैसे आप? All good? All good. So today haircut. Yes, only haircut. You're famous for your color. Specific कुछ haircut सोचा है आपने? Some definition, and I just want to get rid of all the drier ends. जो dead ends जो Dead, निकल हाँ. जाए, थोड़ा movement नहीं है hair के हाँ, अंदर, and ये जो flat है, I don't want it to fall. वॉल्यूम आ जाए. हाँ. परफेक्ट. सो हम वर्क करते हैं वॉल्यूम के लिए, लेयर्स की मूवमेंट के लिए, क्योंकि लेयर्स बिल्कुल फ्लैट हो गई है. लेंथ हम ज्यादा रिड्यूस नहीं करेंगे. परफेक्ट सा बटरफ्लाई हेयरकट करके देता हूँ. What parting center? Or... पार्टिंग आप किसी भी तरफ रख लो, Okay, मतलब कोई great. पर्टिकुलर नहीं हाँ. दे रहा मैं. फॉरहेड थोड़ा सा हाइड करना है मुझे, हाँ. वॉल्यूम के लिए, मूवमेंट के लिए, और टेक्सचर परफेक्ट हो जाएगा उससे. Okay, ठीक है. सो रेडी? Yeah. स्टार्ट करें. Yeah. Oh, here we go. This is your final look. Salon के बाद तो मस्ती लगता है. है ना? तो परफेक्ट मूवमेंट दे दिया हमने ना, जैसे लेयर्स. It's looking really nice. Thank अच्छा you. लगा ना? सो आप पार्टिंग मस्त किसी भी लग रहा तरफ, है. पार्टिंग सेंटर भी अच्छा ही लगेगा. हाँ, सेंटर भी रख सकते हो, बस साइड भी रख सकते हो. घर में वॉश के बाद ऐसे क्यों नहीं लगता? नहीं, एटलीस्ट 50% तो आपका आएगा ही लुक ना वॉशेस के बाद में, Yeah. ऐसा नहीं है. थोड़ा सा थोड़ा. मूवमेंट ड्रायर से कर लोगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. Okay. Great. ठीक है. Yes, thank you. थैंक यू. So you know what kind of haircut you want? Yes, Tell me. I want a butterfly cut. You want a butterfly cut? Okay. Butterfly cut में बहुत छोटे hair हो जाएंगे, right? You know that. So you are okay with tying a pony in school, right? Yeah, Okay. And are you willing to go a little shorter on the length, or you want to maintain your length? I want to go a little bit short. Itna. No, Itna. no, Itna. yeah, 1 inches. yeah. Okay, तो हम 1 inch short करेंगे and all over your hair we'll do butterfly. Bangs are something that I would recommend. Do you like bangs? Have you ever done bangs before? Yes. Did you like it? No. Too much maintenance? Yes. Okay, so we'll not do that. And from the front, how short are you willing to go? Itna?
इतना Little bit longer. इतना Yeah. ओके डन रेडी टू सी योर बटरफ्लाई कट Yes. Just love it. यू लव इट I just want to change my look, little bit of fringe here and don't want to cut my length. I don't like short hair. सो ये आपका नेचुरल हेयर है राइट, फ्लैट फॉल करता है पूरा, स्ट्रेट ही फॉल करता है, कोई स्टाइलिंग नहीं किया हुआ है, नहीं। नेचुरली फॉल करता है राइट। स्ट्रेट हेयर के अंदर मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि कोई भी हेयर कट किया हो वो दिखता नहीं है, हाइड हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेट की वजह से वो लेयरिंग भी होता है तो भी ऊपर वो हाइड हो जाता है राइट। अकॉर्डिंग टू योर फेस शॉर्ट कर सकते हैं फ्रिंज को, ये अभी जो है वो काफ़ी लॉन्ग है, ठीक है, हम यहाँ तक कर देंगे, ठीक है, लिप्स और नोज के बीच में, वहाँ से फॉल स्टार्ट करेंगे, कर्टेन फ्रिंजेस जैसा करेंगे हम, ठीक है। और बाकी के हेयर जो लेफ्ट आउट है नीचे वाले हेयर में, वो हम पूरा ही हम सिमेट्रिक टेक्सचर लेयरिंग कर देंगे, लेंथ शॉर्ट किए बिना, तो फॉल विजिबल हो जाएगी। वो काफ़ी लॉन्ग हो गया, काफ़ी मर्ज भी हो गया अभी ये सारा पार्ट राइट। रेडी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन? Yes. लेट्स गो फाइट। बताइए कैसा लगा? Yes, I'm loving this. This is looking great. Thank you. अब लेयरिंग विजिबल हो रहा है, लेंथ शॉर्ट किए बिना, Yes. I'm very satisfied. और ये आपकी फ्रिंजेस, ठीक है। अगर ये पार्टीशन रखते हो तो बेस्ट है, अगर साइड पार्टिंग रखना हो तो भी रख सकते हो, जो आप नेचुरली रखते हो वह दिस वन राइट। बट अकॉर्डिंग टू मी अगर थोड़ा वॉल्यूम चाहिए और थोड़ा सा फेस फ्रेमिंग चाहिए तो ये सबसे बेस्ट है। Blame it on me. Welcome, first of all, to welcome. Hey, hi. So today, haircut. Haircut. I just wanted a different look. I'm so tired of being long hair, having it same style, like one-sided. That's. So basically, you like the length, ना? I like the length. लेंथ ना, तो बट आपका लेंथ में क्या देख रहा हूँ मैं अभी कि ये बैक से स्ट्रेट है, सो जिसकी वजह से आपका जो एक्चुअल लेंथ है जो भी ऐसे लंबा हो रहा है, बट आपका लेंथ एक्चुअल लेंथ इतना सा है, ये वाला ये आपका लेंथ है, ठीक है। इसकी वजह से थोड़ा सा लंबा दिख रहा है। दूसरी सेकंड चीज की वॉल्यूम कम है, मतलब हेयर अच्छा है, स्ट्रेट है, बट डेंसिटी वाइज भी ठीक है, बट वॉल्यूम नहीं है, तो हमें वॉल्यूम रखना है जिससे काफी सारा वॉल्यूम और टेक्सचर क्रिएट हो जाए, मूवमेंट काफी सारी आएगी। फ्रंट शुड भी शॉर्ट, थोड़ा सा कर्टन बैंड भी रखेंगे, वॉल्यूम भी क्रिएट करेंगे, टेक्सचर भी क्रिएट करेंगे, और लेयर्स की क्वांटिटी भी अच्छी रहेगी। करें स्टार्ट? Perfect. Let's go. फाइनल लुक हो गया जी। Loved it. अच्छा आ गया वॉल्यूम ना? Yes. And the bounce. वॉल्यूम, मूवमेंट अच्छी हो गई, सबने डिस्कस भी किया, आपकी डेंसिटी भी सेफ है। Something new, something nice. क्रेडिट दे देना आप सर को, सर को मेरा तो काम ही है, लेकिन मेन क्रेडिट तो सर का ही है। Yeah. बाद में बात करेंगे. This is really good. Nice. Yeah. Thank you so much. Welcome. Love it. Done.
I finally caved. I gave myself the DIY butterfly cut, which was popularized by Brad Mondo. This technique makes over direction and cutting layers into your hair so much more simple. You just do one ponytail right in front of your forehead like a unicorn horn, and one that sits right on top of your head with the rest of your hair. I used eye drops to measure the amount that I'm going to cut because you have to cut the same amount in the front ponytail and the back ponytail. Watching this back, I actually realized that I cut way more off the back ponytail than I did the front, so measure correctly. Because I didn't measure correctly, I actually noticed that some of my layers were a little bit more choppy, so I had to go in and fix it. I also wanted to blend the front half of my hair into the back half of my hair. Usually when I cut layers into my hair, it takes like over an hour, but this took like 15 minutes or less. I'm checking all of my layers to make sure that they're even on both sides, and this is what it looks like when it's completely styled. I currently have pretty textbook mid-length hair, but I like how now with the shorter layers, it looks like an actual hairstyle rather than short hair that's grown out to mid-length hair.